नमस्कार, मैं हूं भावेश और आप देख रहे हैं भारत भूमि न्यूज इंडिया। आणंद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करमसद आनंद महानगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म लॉन्च कर दिए हैं। कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टी ने युवाओं को प्राथमिकता देने और नई सोच के साथ चुनाव लड़ने का संकल्प दोहराया है। पार्टी की ओर से घोषणा की गई है कि इच्छुक उम्मीदवार 4 अप्रैल 2026 शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और आनंद जिला कांग्रेस समिति कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस दौरान उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से सुनकर सेंस प्रक्रिया के जरिए योग्य प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और पार्टी ने विकास, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया। साथ ही युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की गई है। आज रोज आणंद जिला कांग्रेस समिति खाते करमसद आणंद महानगरपालिका जे नवी बनी है एनी चूंटणीनी जाहेरात टूंक समयमां थई शके एम छे, त्यारे जे उम्मीदवारों पोतानी उम्मीदवारी करवा मांगे छे एना माटे उम्मीदवारी पत्रनुं आजे लॉन्चिंग करी रह्या छे। साथे साथे जे घणा वर्षथी आणंद नगरपालिका होय, विद्यानगर नगरपालिका, करमसद नगरपालिका आ समावेश करीने जे महानगरपालिका साथे 4 गामडाओने जोइन कर्या छे, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ગામડાઓના વિકાસને રૂંધવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। પણ જ્યારે આ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે જે જૂનો ભ્રષ્ટાચાર અત્યાર સુધી થયો છે એ લોકોએ જોયું છે। જ્યાં ગામના વિકાસ પોતાનો નથી થયો ત્યાં આજે મહાનગરપાલિકા બનાવી અને લોકો ઉપર ટેક્સનું ભારણ વધારે નાખ્યું છે। એટલે આ જાગૃતિનો લોકો સુધી પહોંચાડીશું, ભ્રષ્ટાચારના પ્રશ્નો લોકો સુધી પહોંચાડીશું। સાથે સાથે આ જે આણંદ મહાનગરપાલિકા બની પણ આજ લગીન જો આણંદ નગરપાલિકા જ પોતે વિસ્તારોને ગટર લાઈન, પાણીની અને સ્વચ્છતાની સુવિધા આપવામાં જ્યારે નિષ્ફળ ગઈ છે ત્યારે આ બીજા ગામડાઓ અને શહેરને ઉમેરી આ શહેર મહાનગરપાલિકા બનાવ્યું તો એ કેટલો વિકાસ કરશે એ જોવાનું રહ્યું। ત્યારે આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસ 52 વોર્ડમાં પોતાના મજબૂત ઉમેદવારો ઉતારી અને જીત હાસિલ કરી કોંગ્રેસનો મેયર બનાવશે।